Moving Finger, 1899, written by Edith Wharton. Claydon sat, gazing up at the picture. क्लेडन वहीं पर बैठ जाता है जहाँ पर वो पिक्चर उसकी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए लगी हुई थी। फिर यूँ हुआ कि एक दूसरे को तकते रहे यूं ही, वो अंदाज़े बयां से कासर, मैं लफ्ज़ से इब्तदा से आजज़। क्लेडन कन्फेस करता है नरेटर के सामने। क्लेडन सैट गेजिंग अप एट द पिक्चर। ही डिस्कस्ड फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पिग्मेलियन, a Greek mythology. A king who created a statue of a woman and fell in love. एक बादशाह ने एक स्टैचू बनाया था एक औरत का और फिर उसको उस स्टैचू से मोहब्बत हो गई थी। मिस्टर क्लेडन कहता है कि उसने भी एक पोर्ट्रेट बनाया और उसे उस पोर्ट्रेट से मोहब्बत हो गई, क्योंकि मिस्टर क्लेडन ने उस पोर्ट्रेट को वक्त के साथ साथ तब्दील किया और वो जो ब्यूटी थी, वो जो यूथ उस पोर्ट्रेट ने सेक्रीफाइस की है, वो एक ह्यूमन डिज़ायर है जो कि मिस्टर ग्रेंसी चाहते थे कि उसकी बीवी उसके साथ ही बूढ़ी हो। तो मिस्टर क्लेडन ने ना चाहते हुए भी अपने मास्टरपीस को कई बार चेंज किया, लेकिन आखिर पर वो कहता है कि मैं जब भी इन आँखों को तब्दील करने की कोशिश करता तो ये आँखें मुझसे कहती कि अब वो आँखें मिस्टर ग्रेंसी को मरता हुआ देख रही हैं, और वो आँखें मिस्टर ग्रेंसी की नहीं, अब वो आँखें मिस्टर क्लेडन की हैं, यानी मिस्टर क्लेडन के साथ वो तस्वीर बातें कर रही है। क्लेडन लॉस्ट हिज सेंसेस, ही लव्ड पोर्ट्रेट। उसने आँखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। दोनों ही मिसिस ग्रेंसी की आंखों में देखकर अपनी बात भी बयान कर देते हैं और उसकी बात को भी सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने हमें ये बात कही है। आइज़ इज़ दी विंडो ऑफ सोल। वाकई में आँखें इंसान की रूह की वो खिड़की हैं जिसमें से इंसान दूसरे इंसान की रूह को देख सकता है। लेकिन ये सारी बड़ी और गहरी बातें हैं। LLB पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को भी फ़िलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कहानी को देखें, स्टडी करें, इसके रियल टेक्स्ट को पढ़ें। कहानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखी गई है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा किया गया है। He began slowly. Pygmalion turned his statue into a real woman, turned my real woman into a picture. Small compensation, but you don't know how much of a woman belongs to you after you have painted her. Well, I made the best of it. At any rate, I gave her the best I had in me, and she gave me in return what such a woman gives by merely being. And after all, she rewarded me enough by making me paint as I shall mine alone, and that was her beauty, for no one else understood it. To Grancy even, it was the mere expression of herself. What language is to thought? Even when he saw the picture, he didn't guess my secret. He was so sure she was all his, as though a man should think he owned the moon because it was reflected in the pool at his door. Well, when he came home and sent for me to change the picture, it was like asking me to commit murder. He wanted me to make an old woman of her who had been so divinely, unchangeably young, as if any man who really loved a woman would ask her to sacrifice her youth and beauty for his sake. At first, I told him I couldn't do it, but afterward, when he left me alone with the picture, something queer happened. I suppose it was because I was always so confoundedly fond of Gracie that it went against me to refuse what he asked. Anyhow, as I sat looking up at her, she seemed to say,
I'm not yours, but his, and I want you to make me what he wishes. And so I did it. I could have cut my hand off when the work was done. I dare say he told you I never would go back and look at it. He thought I was too busy. He never understood. Well, and then last year he sent for me again. You remember, it was after his illness, and he told me he'd grown 20 years older and that he wanted her to grow older too. He didn't want her to be left behind. The doctors all thought he was going to get well at that time, and he thought so too. And so did I when I first looked at him. But when I turned to the picture, now I don't ask you to believe me, but I swear it was her face that told me he was dying and that she wanted him to know it. She had a message for him, and she made me deliver it. He rose abruptly and walked toward the portrait. Then he sat down beside me again. Cruel. Yes, it seemed so to me at first, and this time if I resisted, it was for his sake and not for mine. But all the while I felt her eyes trying me, and gradually she made me understand. If she'd been there in the flesh, she seemed to say, wouldn't she have seen before any of us that he was dying? Wouldn't he have read the news first in her face? And wouldn't it be horrible if now he should discover it instead in strange eyes? Well, that was what she wanted of me, and I did it. I kept them together to the last. He looked up at the picture again. But now she belongs to me, he repeated. Pygmalion painting, beauty, secret, murder, love, sacrifice, ownership, change, cruel thing. कुछ दिन पहले एक फ्रेंड की पोस्ट पर मैंने शेर पढ़ा था, अपनी जानिब तसलसल से खींचती हैं मुझे, कशिशे शकल की जिंदा मिसाल हैं तेरी आंखें. Claydon and Mr. Grancy lost their senses and they involved in love with the portrait. Ladies, इस बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं? ये एक सवाल है जिसका शायद अभी जवाब नहीं मिला. एक अननोन ऑथर लिखते हैं, My dear beautiful strong women, rest your mind. It's not your fault. Some men never grow up. They just grow older. मेरी प्यारी मजबूत लेडी, अपने जहन को सुकून दो, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं. कुछ मर्द हजरात मेंटली तौर पर बड़े ही नहीं होते, वो सिर्फ बूढ़े होते हैं. सो ये वो ओपिनियन है जो मैं सिर्फ क्रिटिकल कमेंट के तौर पे प्रेजेंट करूँगी. अगर आपको कोई और सूटेबल ओपिनियन लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए शेयर कीजिएगा, सो दैट के इस कहानी के कंक्लूजन को हम मिल के वाइंड अप कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.